Hello guys, so here we are with our next topic that is on heat treatment. So what exactly is heat treatment? So heat treatment basically as the name suggests, it means we are treating something with heat. It means we are working on something with the help of heat. Clear? So heat treatment basically is a process that is used on the materials to change their properties. Okay? So while we need to change the properties of the material, but before that, we must tell you what is heat treatment. So, what it is exactly? Heating of metal to a specified temperature. So, इसमें हम करते क्या है? हम एक metal लेते हैं. It can be any material, and we are heating it to a specified level of temperature. Clear? So, the temperature is basically going to be different for different materials depending upon our requirement. After that, we are keeping it at that temperature. It means basically it is called holding. Clear? So after attaining a particular temperature, we are going to hold that body. It is basically called holding. Holding means we are going to heat that body at particular temperature for a given amount of time. Now this time is again going to be different for different materials depending upon the properties required. And after that we are going to heat, cool it. So basically we have three steps. First one is called heating. Second one is called holding at that temperature for a given period of time, that is called soaking basically. And last one is called cooling. Clear? So in simple words we say we have three steps. First one is called heating. Second one is called soaking. And third one is called cooling. So that's how we work on the materials with respect to heat treatment. Clear? So in the heat treatment, first process is going to be heating. So when I say heating, the main thing is going to be the temperature of heating. That at how much temperature I am heating it, the material. Clear? After that, next is called sorting. As I told you, it is the process in which the material is basically hold at a particular temperature for a given period of time. Clear? So soaking is basically dependent upon the time, that for how much time we are holding that material on a particular given temperature, and after that the last step is called cooling it. Clear? Now there are a lot of ways of cooling it. So what exactly it is? So in the cooling, the main thing is which type of cooling medium we are using. When I say cooling medium, it means we can use air for cooling, we can use water for cooling. At the same time, we can use brine solutions also. Clear? Or oils also. So that basically represents a cooling medium. And second thing, what is the cooling rate? So when I say cooling rate, I am basically talking about the टाइम ड्यूरेशन. आप किसी बॉडी को बहुत जल्दी गर्म कर रहे हैं या बहुत ही स्लोली उसको कूल कर रहे हैं. क्लियर? तो बहुत स्लो कूलिंग कर रहे हैं, बिल्कुल आराम से कूलिंग कर रहे हैं एट रूम टेम्परेचर. सो दैट इज द डिफरेंस कि आप किस टाइप की कूलिंग रेट से उसको कूल कर रहे हैं. सो हीटिंग में मेन थिंग इज द टेम्परेचर, सोकिंग में इट इज अ टाइम, एंड कूलिंग में इट इज अ कूलिंग मीडियम एंड द कूलिंग रेट एट विच वी आर कूलिंग इट. क्लियर? So इसको हमने शो करना हो ग्राफिकली, it basically looks like this. Clear? On this side if I have temperature, and on this side if I have time, it will basically look like this. So we are going to heat it at a particular temperature. After that we are going to hold it at that temperature for a given period of time, and after that the cooling process. So this thing basically यहां से लेकर यहां तक आपका जो प्रोसेस है वो क्या शो कर रहा है? It is showing heating or heating rate. This one basically represents the soaking, and this last line basically represents the cooling. Now this is going to be same for all the materials we are using. It is going to be in three steps. Heating is the first step. Then we have soaking, and then we have cooling. Clear? Now, after that, why we are using heat treatment? So,
the main cause of using heat treatment is that there are some mechanical properties of the material. For example, hardness, toughness, ductility, reduce internal stresses, or we can say also tensile strength. So we have to change the properties according to our requirement. कुछ bodies में हमको hardness ज़्यादा चाहिए होती है, some bodies में हमको ductility और toughness ज़्यादा चाहिए होती है. So depending upon that, our जो requirement है उसके accordingly we have to change the properties of the material. So that is why we are using heat treatment. ये चीज हम कर रहे हैं यहाँ पे हीटिंग, सॉकिंग, कूलिंग, उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो मटेरियल की प्रॉपर्टीज है वी हैव टू चेंज देम. क्लियर? सो हार्डनेस, टफनेस, डक्टिलिटी, reduce internal stresses, these are the some of the properties for which we are working on the materials in the form of heat treatment. Although internal stresses को reduce करना एक प्रॉपर्टी नहीं है, जैसे ड्रॉबैक है जो अगर बॉडीज के ऊपर कोल्ड वर्किंग करते हो तो दे मे हैव सम इंटरनल स्ट्रेसेस, तो उनको निकालने के लिए वी कैन आल्सो यूज द हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस. क्लियर? नाउ आफ्टर दैट different types of heat treatment processes. So we have different types of it. Today I am going to discuss about three of them. First one is called what is annealing, second one is normalizing, and third one is called quenching. Clear? Now the three different heat treatment processes, they are basically different depending upon the type of cooling which is used in them. For example, for annealing process, the type of cooling we are going to use is called furnace cooling. It means after heating the body and soaking it, जब उसकी आप cooling करोगे उसको आप furnace में cool करोगे, clear, in the absence of air. So in annealing, furnace cooling is used. Second case, as the name suggests, it is normalizing. It means normal. Clear? तो अगर आप किसी बॉडी को बाहर रख के at normal conditions और normal air में रख के उसको आप कूलिंग कर रहे हो तो वो क्या है? It is called normalizing it. And the last one is called quenching. Clear? So quenching basically it means it is called rapid cooling. Clear? इसमें आपकी जो कूलिंग है वो रैपिड होती है, but depending upon the kind of material which is used for cooling purpose. So in quenching, that material can be oil, or it can be a gas, or it can be water, or it can be brine solution. Although we say that brine solution जो होता है, it is having the highest cooling rate as compared to water, gas and oil. So these are the some of the mediums which can be used for the quenching purposes in case of quenching method. Clear? Now I am going to tell you how annealing, normalizing, quenching acts for a single thing. We are having austenite. Clear? Now on this austenite, after heating it, I am going to apply the process of normalizing, annealing and quenching onto it. So there are three ways of cooling it. First one is called slow cooling. Clear? Second one is called intermediate cooling. And the last one is called rapid cooling. Clear? So as the name basically describes them, when I say rapid cooling, it means what I am doing quenching. Clear? Firstly, when I say slow cooling, slow means in the furnace, in the absence of air, बहुत हम उसको slowly cool कर रहे हैं. तो after heating it, अगर उसकी आप slow cooling कर रहे हो, it means it is a case of annealing. एंड सेंटर में आपके पास क्या है? इंटरमीडिएट कूलिंग. जिन दोनों के बीच में आ रही है वो बेसिकली क्या है? नॉर्मल एयर. अगर उसको आप एट नॉर्मल टेम्परेचर कूल कर रहे हो तो उसको हम क्या बोलेंगे? नॉर्मलाइजिंग. सो दिस बेसिकली रिप्रेजेंट्स द नॉर्मलाइजिंग. क्लियर? सो एक ही बॉडी के ऊपर हम तीन तरह के डिफरेंट प्रोसेसेस अप्लाई कर रहे हैं. क्लियर? तो उससे होगा क्या? अगर आप ऑस्टेनाइट को हीट करने के बाद उसकी रैपिड कूलिंग करते हो तो आपको जो बॉडी वहां से रेडीमेडली मिलेगी, that is going to be martensite.
क्लियर। इन द केस ऑफ एनिलिंग आपको यहां से जो बॉडी मिलेगी दैट इज गोइंग टू बी कोरस पियरलाइट। क्लियर। एंड इन केस ऑफ इंटरमीडिएट नॉर्मलाइजिंग इट इज गोइंग टू बी here is chorus, this is going to be called intermediate peerlite. Or we are going to say we are going to have a peerlite structure that is very fine as compared to the chorus peerlite structure in case of annealing. So one body, three different types of processes and three different types of material with different types of grain size available after the process. So in the case of annealing, the property which is basically improved is mainly toughness. Clear? So आपके पास जो दो प्रोसेस है एनिलिंग और नॉर्मलाइजिंग, दो प्रॉपर्टीज को इंप्रूव करते हैं. फर्स्ट वन इज टफनेस, सेकंड वन इज बेसिकली कॉल्ड टेंसाइल स्ट्रेंथ. क्लियर? बोथ दिस प्रॉपर्टीज आर इंप्रूव्ड, बट डिफरेंस क्या है? एनिलिंग में जो आपकी हार्डनेस आएगी बॉडी की वो क्या आएगी? कम आएगी एज कंपेयर टू इन केस ऑफ नॉर्मलाइजिंग. क्लियर? तो नॉर्मलाइजेशन करने के बाद आपके पास जो स्ट्रक्चर आएगा उसका इट इज गोइंग टू बी इंटरमीडिएट पियरलाइट. सिंपल सी बात है, जहां पे आपका कूलिंग रेट ज्यादा मिलेगा, क्लियर, उसकी हार्डनेस क्या आएगी? ज्यादा आएगी. इट मींस अगर रैपिड कूलिंग है सबसे ज्यादा हार्डनेस, उससे कम कूलिंग कहां पे है? नॉर्मलाइजिंग में, तो उसकी हार्डनेस क्या आएगी? थोड़ी सी ज्यादा आएगी. किससे? एज कंपेयर टू एनिलिंग. एनिलिंग में क्या है? बिल्कुल स्लो कूलिंग हो रही है. जहां पे बहुत ही स्लो कूलिंग हो रही है वहां पर की हार्डनेस क्या आएगी? कम आएगी. क्लियर? एंड सेकंड केस, इन दोनों में डिफरेंस क्या आएगा? एनिलिंग में पोरस पियरलाइट है तो उसका जो आपका ग्रेन साइज का स्ट्रक्चर है वो क्या आएगा? लार्ज आएगा एज कंपेयर टू ग्रेन साइज ऑफ इंटरमीडिएट पियरलाइट स्ट्रक्चर. क्लियर? तो ये थोड़ा सा फाइन रहेगा एज कंपेयर टू कोरस पियरलाइट. तो एक ही वे में डिफरेंट तरह की प्रॉपर्टीज आएगी. दिस इज गोइंग टू बी हैव हाईएस्ट हार्डनेस, इसकी हार्डनेस कम आएगी, बट इससे क्या आएगी? ज्यादा आएगी. एंड ये जो आपकी दो बॉडीज हैं एनिलिंग और नॉर्मलाइजिंग, ये मेनली दो काम करते हैं. टेंसाइल स्ट्रेंथ को इंप्रूव करते हैं और टफनेस को इंप्रूव करते हैं. एट द सेम टाइम जो आपकी बॉडी की टफनेस अगर इंप्रूव हो रही है तो उसकी जो मशीनेबिलिटी है वो भी क्या हो रही है? बेटर हो रही है. सो इन बोथ दीज टू केसेस आपकी जो बॉडी की मशीनेबिलिटी है, इट मींस उस चीज के ऊपर आपने मशीनिंग के प्रोसेसेस अप्लाई करने हो तो उसको आप बेटर वे में अप्लाई कर सकते हो. So that is all about the annealing, normalizing and quenching processes for a single body, that is austenite. So this is all about the heat treatment processes. Thank you very much.